नमस्ते, गुड आफ्टरनून। तो मेरा नाम जहान है, जहान ईरानी, और मैं एक शेफ़ हूँ। ये मिलन है, ये मेरा शेफ़, जू शेफ़, पार्टनर शेफ़ है। आज हम आपको 3 fun and simple, little healthy, not so healthy also रेसिपीज दिखाने वाले हैं। तो फर्स्ट रेसिपी है भेल। आपके पैम्पलेट्स में रहेगा भेल। हमने भेल मिक्स के लिए खुद का भेल मिक्स बनाया है ये टाइम के लिए। नॉर्मली यू कैन ऑल्सो यूज रेडीमेड पैकेज मिक्सेस, दैट इज ऑल्सो फाइन। ज़्यादा के ज़्यादा नहीं, सादा। हाँ, सो राइट, सो अभी मुरमुरा हमने सादा लिया है, नॉन फ्लेवर। उसमें कुछ एक्स्ट्रा मसाला कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि फिर बाद में वो फ्लेवर हमारा ड्रेसिंग का फ्लेवर के साथ मिक्स होके इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आ रहा था। तो हमने सादा मुरमुरा लिया है इसके लिए। उसके ऊपर हमने गाटिया डाला है। दैट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट you get the bale essence of the dish. Otherwise it's not really important. Anything can be, जो भी आपको डालने का है, ब्लैक चना फॉर एग्जाम्पल, वो हम डाल सकते हैं। तो ब्लैक चना हमने क्यों चूज किया ये सेशन के लिए, क्योंकि ब्लैक चना इट्स अ हेल्थी ऑल्टरनेटिव टू फूड, टू पुटिंग स्टफ इनटू बेल. It is good for, it's an immunity booster. It helps reduce cholesterol. It is it's a high energy packed food. So all these items over here are high energy packed. The only thing that is जो actually unhealthy है वो घाटिया है वो इसमें. Actually even puffed rice is very healthy. In around 100 grams of puffed rice, you're only going to get half a gram of fat. It's a high energy food with a low fat ratio to it. Good source of protein, very decent, 6 grams per 100 grams. So that's also you're going to help maintain some amount of muscle. Your carbohydrates are high. Obviously I'm not a doctor, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो फिर आपको डॉक्टर को पूछना पड़ेगा आप खा सकते हैं कि नहीं. The last thing is matki. Matki is also it's a high fiber food. This is it's sprouted essentially, and इसमें अभी ये हमारा जो भेल बन रहा है, मिलन जी जो भेल बना रहे आगे, अभी बहुत बोरिंग दिख रहा है, तो इसलिए हमने इसके लिए एक ड्रेसिंग भी बनाया है. हमारा ड्रेसिंग स्टैंडर्ड टैमरिन पेस्ट या इमली का चटनी वो सब नहीं डाला है. हमने कुछ दूसरा बनाया है. इसमें हमने लेमन, हनी, कोरिएंडर, हल्का से मिर्ची का पेस्ट और बस उतना ही डाला है. तो फिर you will still get, आपको वो खट्टा मीठापन आएगा, but you will still be looking at much healthier options. For example, honey is an antioxidant, it's better. Lemon is full of vitamin C, which is also great. Coriander is great for flavor, and it's a good kidney flusher. And it's a great kidney flusher. And so that is basically a shortcut to a good healthy bhel without really needing too much or putting in too much work into it. You don't require a lot of ingredients or a lot of time to do it. You'll still get a nice healthy snack. Whoever would like to try some, please come up and do try some. We have some plates and we have some forks and spoons. You can just come and taste it. If you can come taste each ingredient individually if you want to understand what has gone into it. So you will get the flavors. Right. तो ये जो हमने पैम्फलेट में दिया है, ये मैंने थोड़ा अलग चेंजेस किया है. अलग से थोड़ा बहुत नया ड्रेसिंग या सॉस बनाया है इसके लिए. So for that we used again honey, lemon, coriander, chili paste. Yeah, that's about it. Next we've got a tulsi pesto pasta. Now we specifically use tulsi because I think सबके घर में तुलसी तो एक झाड़ रहता ही है. Everybody has, even I have, me being a Parsi, even I have one. I'm not sure, probably for tulsi pesto though. And so very 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 simple recipe. I follow the recipe exactly as written in the pamphlet. We've used cashews as a way to give it some sort of body.
otherwise you'd only be eating leaves. सिर्फ पत्ता खाते रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता है. Apart from that, so tulsi, basil, cashew, garlic paste, salt और olive oil. Olive oil कौन सा भी यूज कर सकते हैं जो आपका पैंट्री में है. Buy that. Don't buy too much. Olive oil is not the best to use for cooking. Honestly, that's a big myth. You should be using high smoke point oils such as sunflower or rice bran or cottonseed. Cottonseed not the best, but it's still a much higher smoke point than olive oil. Olive oil, you kind of ruin your. It's an expensive oil to use for cooking, and it's not worth it. So I would suggest using it as a finishing oil for this because we kept it raw, totally untouched by fire, so that the only heat you're getting is from the hot pasta that you put your sauce on, and that automatically cooks everything while you're, on it. We've moved away from cheese in this one. Lots of there could be but you can always add dairy to this in order to get like a more creamier pesto. You can always add cream or even milk, just a dash of milk to give it color. No problem. Yeah, it's possible. See, honestly, in cooking, it's not rocket science. It's more like, do and try it. If you like it and it works, that's good. So red capsicum and yellow capsicum, that is something that we've used in this recipe, but you can also use normal green capsicum that you get in the everyday market. हरा वाला भी use कर सकते हैं. Yes. So for the stuffing, we've used paneer. Paneer is quite easily available to all of us. You can even make it at home. A lot of people do. I feel that's the best. That's the best. घर बनवलेली पनीर सगळ्यात चांगली आहे. Yes. We stuffed that with ready-made pizza mixes. For example, this one, you get Snap-in is a good company. I like using it. You get other companies as well. This is to be mixed with the paneer. Yeah, this is to be mixed right in with the grated paneer, is it? Yes. Okay. And कुचा हुआ पनीर, उसमें वो sauce डालना. And red chili flakes if you want the extra zing. Apart from that, that's all. Little salt, maybe a little oil, depending on how much what fat content you got. If you got cow paneer, you have a higher fat content. If you have the other paneer, you don't. थोड़ा नमक, थोड़ा तेल. Yeah. Put it into the oven and just watch it all melt away. It looks great. The dessert we're doing for today. Can you ask me one question? So Sure, please stuffed ask. capsicum is with paneer. Yes, this one is with paneer, but you can stuff it with anything. For example, in the restaurant we use rice and stuff like that to stuff the What about capsicum. non-veg? Non-veg keema, more or less keema. You want the pieces really small because otherwise they're not going to cook evenly within the capsicum So itself. raw keema, not cooked keema. You can do it cooked as well because then you're just going to reduce the amount of time you actually cook the capsicum inside the oven for. So if it's a red meat, obviously you take longer to cook it. Like for example, mutton or something takes much longer to cook than chicken. Fish, you can even stuff it with fish. I've never tried it myself, but it is possible. Yes, serving tips. So honestly, I'm not a big plater. I just eat. But as chef एक Milan मिनिट, हे तुम्हाला सांगायला पाहिजे. मी त्यांना विचारलं की त्याला सर्विंग कसं करायचं म्हणजे चांगलं दिसण्यासाठी. प्रेझेंटेशन. तर त्या म्हणाला की मी जास्त प्रेझेंटेशन मध्ये इंटरेस्टेड आहे, मी जास्त खाण्यात इंटरेस्टेड आहे. त्याशिवाय you can serve the pasta as in one bowl. You can have the capsicum separate. If you're doing it for a party, for example, you can have it side by side in two separate dishes, so they can take how much of each thing they would want. Yes, म्हणजे दोन्ही मिक्स पण करू शकतात. पास्ता आणि त्याच्या शेजारी ते कॅप्सिकम ज्याच्यात ते पनीर खुर्चन स्टफ्ड आहे, किंवा दोन वेगवेगळ्या बोल मध्ये पण सर्व करू शकता आणि आपल्या इच्छेनुसार. चांगला शब्द आहे ना. आपल्या इच्छेनुसार आपण थोडंसं कॅप्सिकम आणि थोडंसं पास्ता आपल्या प्लेट मध्ये घेऊ शकतो. Thank you. Everything is ready to taste. You are more than welcome. We will. Yes, please do. So last but not least this is the most unhealthy thing on the entire table. This is serradura. It comes from. Sorry, 1 second. I just have to interrupt you here. त्या म्हणतात की हे एकदम अनहेल्थी आहे. म्हणजे आता त्या डॉक्टर म्हणाल्या ना, जॉय नाही, डॉक्टर शोना नागाच म्हणाल्या की जे एकदम टेस्टला एकदम चांगलं आहे ते एकदम अनहेल्थी आहे म्हणाल्या त्या. तर हे तसा प्रकार आहे, पण त्याच्यात मजा फार चांगली आहे.
Yeah. Serradura. Yes, Serradura. Serradura. ये Portugal country से आता है. It is basically just cream and condensed milk with a bit of vanilla flavoring. So we start off by just mixing the three ingredients I just mentioned. You whip them with one of the whipper machines. क्रीम, मलाई, कंडेन्स्ड मिल्कचा कॅन And vanilla flavor. अँड व्हॅनिला फ्लेवरिंग हे तीन एकत्र त्या मिक्स करायचे किंवा किंवा हाताने. No, you have to use a blender. No, with your hand you can whisk it. You can. I mean, it depends how much energy you want to put into it. It's all. You know, शो like if you want द to put- विस्क ऑल्सो ना. Yeah. Yeah, it got electric whisk. Yeah, he showed it. देखो So this is an electric whisk, pretty standard in one of my kitchens, maybe non-standard in your kitchens. But you can also use an egg whisk. They're wiry and round. येस Hand one. The hand ones. The bigger they are, the more the faster you're gonna get to your desired consistency. ओके Last thing for this dessert is, as rightly mentioned, the biscuit crumb. The biscuit crumb for me, I use digestive biscuits, and this is actually standard I use in my kitchen, in my recipes for all my bases. Not just because of the great health factor of helping you digest your food, but also I feel it has some of the best flavor coming out of, like, more natural, like the wheat that they use is a lot more. You can get the real flavor of the wheat. With that, I again make it much more unhealthy. I use granulated sugar, the normal home sugar that you get, and butter. हाँ म्हणजे आता मला वाटतं की आपके रेसिपी के बुकलेट में मारी बिस्किट लिखा है. नो मारी बिस्किट, डाइजेस्टिव बिस्किट. मारी बिस्किट से भी हो सकता हो है सकता है, ना? हो सकता है, कौन सा भी लेकिन बिस्किट से हो ये सकता है. किचन में डाइजेस्टिव बिस्किट्स Yes. होते हैं और इसको फिर सब उसमें शक्कर मिलाते उसमें हैं. शक्कर मिला के नीचे से हम पहले बिस्किट का लेयर लगाएंगे, उसको प्रेस करेंगे, अच्छा से दबाएंगे, तो फिर वो भी वापस बिस्किट की तरह सॉलिड हो जाता है. और फिर उसके ऊपर एक क्रीम मिक्सचर डाल के फ्रिज में रखते हैं. If your mixture is sometimes the mixture comes out a little loose, like it's come out now because it's melted on the way here now. But you can just freeze it. That is also like a way to do it. But again, you have to time it much better than in the fridge. You can just sit it in there 2 days maximum, and then you have to like throw it out. आप सवेरे कोई पूछ रही थी ना फ्रिज में कितने दिन, ये वाला 2 दिन. नहीं रुकता है 2 दिन. अरे एक भी दिन में खत्म. सेट करने के लिए भी 2 दिन चलेगा बोल रहे वो. To set today? No. You can keep it in the fridge. Keep it, हाँ. But after 2 days, just don't even try it. You're just gonna get a bad stomach. अच्छा, और अगर आपको कोई इंटरेस्ट है कि ये डिश किसको पसंद है, तो जिसको पसंद है वो जरा हाथ ऊपर करे. देखो It's served regularly at our place. देखो Yeah. वो बहुत खाते हैं और कहते हैं कि बहुत एक तो बनाने में आसान है बहुत आसान है. और खाने में बहुत जल्दी नीचे जाता है. बहुत जल्दी. It just melts in the mouth. Okay then. So that is the end of my presentation. और अगली समीरा मैम का भी presentation खत्म हो गया हाँ, है. और बाबा डूड ये कहते हैं कि अगली बार जब आपका कॉन्फ्रेंस रहेगा तब वो ऐसी जगह कुकरी सेशन करेंगे जहाँ पे स्टोव भी सब अलाउड है. तो आप हर एक स्टेशन पे आप आ सकती है और आप इंटरैक्टिव कुकिंग कर सकती है. Can I ask a question on Sure. behalf of सबके बैग में ना हम पास्ता दिया है. How do we boil pasta? हाँ Okay. Because it becomes lumpy. Right. I mean that's. So there are 3 myths to boiling pasta. One is adding oil to water doesn't help. It's not going to help you at all. The oil is going to sit on top of the water, not going to do anything. नो तेल इन पानी एडिंग. So you start with water either in an electric kettle or on the stove, and then it comes to a boil where it's not going to get any hotter. That means 100 degrees Celsius, 98 is what you'd normally get from tap water. Salt, once it's boiling, salt, let it come back to a boil, because again salt will reduce the temperature, so it comes back up. Roiling, boiling, bubbles everywhere. Throw your pasta in, open, 7 minutes.
no more than 7 minutes. 7.5 minutes should be out of the water. You take it out of the water, you add oil on top and you toss it. And it's not going to stick to each other. After draining and then you add the oil. Yeah. आप समझे? पहले पानी बॉईल करना, पूरा बॉईल जब हो जाता है तब उसमें नमक डालना। नमक डालने से उसका टेम्परेचर फिर से थोड़ा कम होता है, तो इसे फिर से बॉईल होने दो। जैसे ही पूरा बॉईल को आ जाएगा, उसमें इन्होंने क्या किया? थ्रो द पास्ता इन। तो प्लीज डोंट थ्रो, लिम्फेडिमा का एक ये है, प्लीज कीप योर हैंड सेफ। आराम से प्यार से पास्ता उसमें छोड़ देना और खुले आंच पे खुला ढक्कन न लगाते हुए 7 या 7.25 7.5 मिनट तक पकाइए। जैसे ही हो जाएगा उसका गर्म पानी ड्रेन कर दीजिए और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के आपका पास्ता तैयार है। राइट? ओके, अगर आप में से कोई भी ये बनाएंगे कभी, तो रिबेका को जरा फीडबैक दे दीजिएगा। आई एम आस्किंग द क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। और अगर उनको आपका फीडबैक हमें अच्छा लगा तो हम सब आपके घर आएंगे खाने। सो थैंक यू टू Zahan. Thank you everybody. I've got 2 locations of fast food, which is one at Station and one at Dhole Patil Road. And then the rest is all on WhatsApp. I have a production kitchen and we send people stuff. Because I stayed there. So it's a Bank of Baroda building. Yeah, so underneath in that. But that's called Jungli Pav. It's not called Baba. Yeah, that is a separate brand. That is the Jungli Pav brand. That is fully Indianized fast food, veg, non-veg. We had it at the hospital once. It was really nice, but little spicy. But Which it one? was The good. pasta? Yeah. The Jungli Pav. Pav. Jungli Pav. Okay? थैंक यू वेरी मच। Change opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Normal move करना है। एकदम आराम से, हाँ, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे। ये हमारे आगे के सेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है? Good. Okay. अभी हैंड्स को सिर्फ यहाँ तक ही लेना है बस। इतना ही, ऊपर नहीं लेना है, ठीक है? 1, 2, very good. 3, good job. 4, 5, 6, 7, 8. Okay, अभी सेम ऐसे ही नॉर्मल। 1, 3, 4, 5, आराम से 6, 7, 8. Okay. अभी देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
One more time. एक बार और. अब हो जाए. 4, 5 करके टर्न. वेरी इजी एंड सिंपल. ठीक है, एक बार फिर से आप ही करो. हाँ इधर 5, 6, 7 go. 1, 2, 3, 4, 5. फिर से आएगा. 1, 2, 3, 4, 5. That's 1, 2, 3, 4, 5. Okay. अभी हर कोई पार्टनर्स के साथ एक साथ करना है. ठीक है, लेट्स गो. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then 1, 2, 3, 4, 5 and turn. Go. 1, 2, 3, 4, 5 and turn. Okay. Got it? I hope. Okay. Let's go with the music. मुंबई
के तुम मार ही देती हो दिन में। तुझ जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे वर्गी और न होनी वर्गी और न होनी। तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कितनी ना तो सोनी है। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे फायर।